It has been an incredible season for the Kolkata Knight Riders. From the time of the auction, most people knew that they had a good team. But no one would have thought that they would win like this. In a canter, beating every team on the way and dominating the tournament like no other. They spent 24.75 crores on Mitchell Starc. Everyone raised their eyebrows. Questions were asked. But when time came, the big Australian delivered, and delivered in style. Kolkata Knight Riders took a great call in getting Gautam Gambhir back. Two things happened. In 2023, Kolkata had lost its fan base. Remember the match against CSK? Eden Gardens had turned all yellow. But this time round, with the return of Gautam Gambhir, the entire violet and gold came back to support the Knight Riders. Shreyas Iyer was back as captain, and one cannot deny the impact Iyer had. If it was Gautam Gambhir and Chandrakant Pandit off the field, it was Shreyas Iyer who was there inside taking all the calls. An incredible captaincy from him led the Knight Riders to a fantastic victory. But there were some other calls as well. Take Shah Rukh Khan. Despite being ill, he was there for the final. Take Shah Rukh Khan. When he knew that Sourav Ganguly was there for the Delhi Capitals and Eden Gardens could be divided, he made sure that he was there in Kolkata even on a practice night. He has never done that in his life, but he did so to make sure that the Knight Riders' support was united. And from the very start of the tournament, Kolkata was stellar. First and foremost, the Gautam Gambhir magic with the Sunil Narine call. Sunil Narine was absolutely stellar, perhaps the greatest player in the history of the IPL. Narine was given the confidence that he will bat at the top of the order. And that made all the difference. Narine was given the license to kill, and most teams bore the brunt of his attack. It was a call that changed Sunil Narine and the fortunes of the Kolkata Knight Riders. The way he batted impacted his bowling as well, and Sunil was terrific. The other player who shone in the final, of course, was Andre Russell. 3 wickets with the ball, but more importantly, this is the best one has seen Andre Russell field. At every point in time, he was flinging himself. No fitness issues, no other concern, and he looked just the part. The Phil Salt call. Everyone thought that it would be Rahmanullah Gurbaz, the Afghan opener, who will start for the Kolkata Knight Riders. But it was Philip Salt. And the way he assaulted some of the bowlers at the top of the order made sure that Kolkata had revolutionized T20 batting. On many occasions with Narine and Salt, 6 overs would easily yield 70 or 80 runs at the top of the order, and the power play was all Kolkata. That's when the match was won. To give young bowlers like Vaibhav Arora, Harshit Rana a chance meant Kolkata knew what they were doing. Varun Chakravarti too was persisted with and given the confidence to deliver. Practically no experiment whatsoever, and Kolkata clearly knew what they were doing. The first team to make the playoffs, the team to top the pool charts, the team to first play the playoffs against the Sunrisers and winning comfortably in Ahmedabad, it was all Kolkata. And just when people thought that Pat Cummins would wield his magic just like he had done against India in the WTC final or in the World Cup, it was Kolkata all the way in Chennai. From losing the toss, and it could well be a blunder that Pat Cummins will rue, Kolkata Knight Riders did everything right. Everything means everything. Mitchell Starc bowling the ball of the tournament. The ball of the tournament against Abhishek Sharma. And one after the other, Knight Riders bowlers were on song. And at no point in time did Hyderabad have a chance. Third title for the Kolkata Knight Riders, and perhaps the most convincing in their life. Gautam Gambhir will be ecstatic. Bharat Arun, Chandrakant Pandit will all be delighted. Shreyas Iyer will be on cloud 9. But most importantly, Shah Rukh Khan will know that his franchise has once again done the job. After Pathan and Jawan, this is the third high for King Khan, and he and his Bollywood entourage will celebrate.
Kolkata, the party is just about to start despite the cyclone brewing havoc in some of the districts. Over the next few days, we will see a lot of the Kolkata Knight Riders, but suffice to say, it has been a fantastic IPL for the team. But this is looking the team to beat. You are in the playoffs, you're there. I mean, this is the team to beat and go the distance. Thoughts? Well, when you start a season, I'm sure every team, the first objective, if you ask them on the flip chart, they'll write is to make the playoffs. You want to be in the top four. And you're always calculating what does it take, what does it take. Gautam is always like, what do you think? What do you think? I said, 8 wins will get you in the top four, because that's typically how it is. Sometimes with 7 wins and run rate, you sneak in the 4th place. But if you want to be sure, 8 wins. And once you get there, then you say, what does it take to be in the top 2? Because obviously it's a huge advantage with 2 bites at the cherry. So I think we are there, although the queue is there for qualification, which is great. Even from a top 2 perspective, I think we are there. One more win will seal it. So that's a great place to be, because that's one of the objectives that you set out. In the first objective and second objective, you can say, okay, we've checked the box. But that doesn't mean anything until you won it, and all teams are going to come, hard. There's no doubt about it. Conditions are going to be different, and teams who have done it before, teams who have not done it, who's hungrier. So ultimately, it's going to boil down to, I think a lot of it is going to be about, just the same momentum can carry it forward. God willing, fingers crossed, fitness-wise, the team should be all in good shape. And then you have to just play at your best on that given day. Nothing is going to come easy. I have not seen a single game, particularly in the postseason, where it's an easy game and this happened and that happened. None of our games have been easy games. I mean, it's like last minute also something or the other happening here and there. And it's like, I said, why don't you give me a boring game once in a while is what I tell you. It'll be good for the heart. But it's fun. So very happy to be where we are. But, the old line, happy but not satisfied, because satisfaction will always be, and the thrill will be when you can bring the silverware home, and for our fans and for all concerned. So God willing, this is the year. So let's hope for the best. I think we have a great team this season. Obviously, with Shreyas Iyer coming back as our captain, and again solidifies our batting lineup, and with the signing of Mitchell Starc, I think who's amazing with the new ball and at the death. I think KKR looks very strong this season, and we are hoping to have a crackerjack of the season. You spoke about Mitchell Starc, obviously. ने जीता था, वो जो फेलिसिटेशन था ईडन गार्डन्स खचाखच भरा था. मतलब वैसे तो 70-80 हजार अंदर थे स्टेडियम में, और उससे भी ज्यादा लोग बाहर थे. और जब आप लोग आए और वो जो ईडन गार्डन्स में अंदर पहुंचे, और जो माहौल था, वो जो सेलिब्रेशन था, शाहरुख था, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर भी थे, ममता दीदी, तो वो थोड़ा बताइए कि अभी क्या लगता है, अभी जब वो सोचते हो कि अरे क्या अभी तो ये मतलब एक होता है ना, एक यादगार वो जो होता है दैट विल स्टे फॉर द लाइफ टाइम, तो वो थोड़ा बताइए किस्सा. नहीं, एक तो देखिए, पहली बार अब आईपीएल चैंपियन बने थे, इसी की बहुत बड़ी खुशी थी. जिस तरीके से पूरी वो टीम बनाई गई थी, आप ओनर से लेके हर किसी प्लेयर को लगा के, जो भी हमारा कोचिंग स्टाफ भी था, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए. एंड हमने कभी भी एक्सपेक्टेशन, हमें हमेशा से सुना था कि मतलब बंगाल के फैंस बहुत लॉयल हैं अपनी टीम को लेके, चाहे वो फुटबॉल के हो, क्रिकेट का हो. मतलब वो लॉयल्टी हमने सिर्फ सुनी थी, कभी देखी नहीं थी. हाँ, केकेआर के मैचेस में देखते थे जब हमारा होम ईडन गार्डन में मैचेस होता था, बट नेक्स्ट डे जब हम कैलकाटा गए थे, तो मुझे नहीं लगता किसी की भी एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़िया तरीके से कोई रिसीव करेगा वहां पे आके. मतलब लाखों लोग आएंगे, सड़कों पे जिस तरीके से वेव कर रहे थे, पूरी टीम को रिसीव किया, स्टेडियम में अंदर जाके वहां पे जिस तरीके से हमारा जो बुलाया गया था हमें, मतलब मुझे लगता है कि उससे बेस्ट मोमेंट कोई हो नहीं सकता एक प्लेयर्स या एक टीम और फैंस के बीच में. क्योंकि वो बहुत, हमें लग रहा था कि हम आईपीएल जीत के बहुत बड़ा कुछ कर दिया, लेकिन जब वो एक्चुअल फैंस की नजरों से देखा हमने, तब एक्चुअली पता चला कि हमने कितनी बड़ी, मतलब वो एक अचीवमेंट है कि केकेआर के लिए पहली बार चैंपियन बने हैं. तो वो एक बहुत, मतलब मैं ऐसा मोमेंट कभी लाइफ में ना देखा है, मुझे लगता है देख भी नहीं पाऊंगा. और वो एक मतलब ऐसी चीज थी, वो एक एक चीज आपके दिल से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है कि यार इस तरीके से जीते थे.
यहाँ गए थे, इस तरीके से हमें बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने रिसीव किया था, फैंस के केकेआर ने। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ केकेआर के फैंस बहुत लॉयल हैं, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि जितना उन्होंने प्यार दिया हम सब लोगों को, इस पूरी टीम को, और होपफुली इसको 26 तारीख को भी प्यार देंगे और 26 तारीख को फाइनल जीतेंगे। एक याद है इंसिडेंट, केकेआर मैनेजमेंट ने आप सभी का, सब जो प्लेयर्स थे उनका फैमिली, किसी का भाई, किसी का फादर, किसी का मॉम, उसका रिएक्शन एक लिया था और ड्रेसिंग रूम में दिखाया गया था फाइनल के आगे। वो जो जेस्चर था केकेआर प्लेयर्स का, हाउ डिड इट मोटिवेट यू गाइस? मतलब सबके सबके फैमिली की तरफ से एक विश, किसी का दोस्त, किसी का माता पिता, किसी का भाई, तो ये जो जेस्चर, ये थोड़ा थोड़ा वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू गाइस? क्योंकि आप लोगों को तो किसी को शायद अंदाजा नहीं था। नहीं, डेफिनेटली वो सरप्राइज था काफी, क्योंकि हम लोग टीम मीटिंग के लिए गए थे, और टीम मीटिंग्स हमारी कभी भी बहुत लंबी नहीं होती थी। हमेशा बहुत शार्प मीटिंग होती थी, बहुत छोटी सी मीटिंग होती थी, और सिर्फ जो मेन मेन मुद्दे थे उन पे बात करते थे। एंड जब वो फाइनल्स के लिए आए थे तो सब एकदम पम्प्ड अप थे कि भैया ठीक है फाइनल खेलने जा रहे हैं, वो रेडी थे, पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे उस सीजन में। एंड देन जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो फिर वो एक वीडियोस दिखाए गए जब वहाँ पे पूरी फैमिलीज पूरी टीम को विश कर रही थी। तो मतलब बहुत एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि आप 2 महीने का आईपीएल हो जाता है, बहुत बहुत दिन भी हो जाते हैं जब अपनी फैमिली से नहीं मिलते हो, आप लगातार इतना क्रिकेट में घुसे हुए होते हो कि वो एकदम फैमिली की तरफ से फोकस हट जाता है। जब वो जिस तरीके से उन्होंने विश किया, क्योंकि पहली बार था, कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप अपने फैमिली की वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे आपको विश कर रहे हैं। नॉर्मली आप क्या कॉल पे ले लेते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन वो जो पूरी टीम को विश कर रहे हो तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था पूरी टीम के लिए। एंड आई थिंक वही एक ऐसी चीज थी जिसने हमें मोटिवेट किया और फाइनल चैंपियन बनाया हमें। बस एक आखिरी सवाल उसी से जुड़ा है फाइनल को लेके। नाउ दैट केकेआर आर इन द फाइनल्स, ऑब्वियसली 2021 में भी हम लोग ने फाइनल में पहुंचा, केकेआर ने फाइनल में पहुंचा था, मगर दे लॉस्ट इन द फाइनल टू चेन्नई सुपर किंग्स इन दुबई। तो इस बार क्या लगता है, जिस अंदाज से केकेआर ने पहले मैच से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच एट ईडन गार्डन्स, जब सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हराया था, वो लास्ट ओवर में हर्षित राणा ने जो जिताया था, मैच जीत दिलाई थी, और उसके बाद द मोमेंटम, तो क्या लगता है इस बार क्या हम लोग वाकई थर्ड आईपीएल टाइटल जीत पाएंगे? एंड व्हाट विल बी क्रूशियल फॉर केकेआर टू विन दैट टाइटल? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, और केकेआर जैसी टीम है जितना अच्छा खेल रही है, अपने पे फोकस करना चाहिए कि उनकी क्या ताकत है, किस बेटर तरीके से वो क्या क्या अच्छी चीजें करके आए हैं। और इट्स अ नॉकआउट पंच, अब जाके ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ गड़बड़ हो गया तो संभल जाएगी बात, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं, आप ये नहीं सोचते कि वो टीम आएगी तो हम इस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अभी तो तीनों टीम्स की ऑप्शंस खुली हुई हैं। और अगर आप देखते हैं फाइनल में जो टीम आएगी, देन आप फिर सोचते हैं कि हाँ, हमें इस टीम के खिलाफ हमारा क्या गेम प्लान हो सकता है। और गेम प्लान भी फिर आप अपने तरीके से बनाते हैं कि आपकी ताकत क्या है, ये नहीं कि दूसरे की ताकत क्या है। आप अपनी ताकत के बारे में सोचते हैं। और जब केकेआर जिस तरीके से खेल रही है, एक टीम सेटल टीम दिख रही है, जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। जो छाती में अभी तक 2 सितारे लगे हुए थे, वो मुझे लगता है वो टाइम आ गया तीसरे सितारे का।